Hello everyone. In today's lecture, I'll explain you how to read the NCERT and prepare for the board examinations. And I'm sure that by now you must have gone through the notes, isn't it? Once you have studied the notes, come back to NCERT. Now from here we are going to have a quick review of what we have already studied and where all we can apply it. Okay. Chaliye. The foremost thing, this is chapter number 10. See, you can see here, I've already scrolled now. Chapter number 10, we are preparing for this. Now here on the first page you can come up to these lines. They work as solvents, underline this. Then synthesis of wide range of organic compounds, for that also these are necessary. Then containing antibiotic, the antibiotic well versed we are with chloramphenicol. This is used, okay, and this chloramphenicol is used against typhoid fever. Okay, the entire thing from here you can go through here till this line. Look, iodine also is produced containing hormone thyroxine, and the deficiency of thyroxine obviously causes a disease called goiter. Okay, same way, one more thing is that chloroquine is used for the treatment of malaria, and certain fully fluorinated compounds are being considered as potential blood substitutes in surgery. Even this, since MCQ questions are also to be included in your exams now, so from here one of the uses can be given, to be prepared for that. Even let us scroll off, come to the next page. Now what is important here, look here, you can come, it can be represented by general formula CnH2n plus 1 and X. One hydrogen has been displaced by halogen atom. Okay, so Cn, this is the nominal one, more halogen atoms can also be there, but the simplest representation is CnH2n plus 1 X. Okay, now here in this, what else we have to prepare is, look, come up to the allylic ones. Now allylic halides, I'll better use a marker when I'll have to write, then I'll take that. Now look, the halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon-carbon double bond, is known as allylic carbon. The examples are given here. Come up to the benzylic ones also. In benzylic, the halogen atom is bonded to sp3, directly sp3 hybridized carbon is there, okay, to what it is bonded, and especially this sp3 hybridized carbon is attached to an aromatic ring. Now here you can see this CH2, see, halogen is attached to the carbon which is already having 4 valencies. 2 bonds are shown and 2 hydrogen are there, okay, but is attached 1 halogen, then 2 hydrogen and 1 bond is shown. This carbon is attached to one more adjacent carbon which is sp2 hybridized. This is sp2 hybridized, okay, so that's why it is known as allylic. Now in case of benzylic, what is there, scroll it off here. The carbon to what it is attached is sp2 hybridized. This one is sp2 hybridized, but sp2 hybridized typically of a aromatic ring. So this way you can differentiate off. Then comes vinylic halides. Now what do we exactly mean by vinylic? In vinylic case, the halogen atom is bonded to a sp2 hybridized carbon atom, directly to sp2 hybridized. This was sp2 hybridized carbon atom, and directly to this sp2 hybridized carbon atom halogen is attached. The same thing you can see in aryl ones also, but the basic difference between vinylic and arylic will be, in vinylic halogen is attached to that sp2 hybridized carbon atom which is on one chain, but if it is the sp2 hybridized carbon is of aromatic ring and to that directly halogen atom is attached, see this one, so it is known as aryl halide. The typical names will be coming here, and these names you should be well versed with. You should know these names, how to give the names. Same way some common names will also come, and these common names, what you need to go through is, like, look, I'll tell you here, if I'm writing like this, and now halogen is attached to this. Now here I am telling you the common names apart from this classification. Common names what you should know for preparing lesson number 10 properly. Now you can see Cl is attached to such carbon which is in turn attached to 2 carbon atoms. Since it is attached to 2 carbon atoms and this type of arrangement is there, this type of arrangement, so this is isopropyl chloride. Iso for this kind of attachment, propyl because 3 carbons are there, and chloride because chloro group is present as a functional group. So common name isopropyl alcohol, isopropyl chloride will be given to this. In case it would have been this way,
Look, 4 carbon atoms and Cl is attached to this. Now this is secondary butyl chloride. So these are few common names like iso, normal iso, neo we use, primary, secondary, tertiary, and quaternary we use, isn't it? So here this carbon is attached to such two carbon atoms in turn, no, further. So this is secondary butyl. Same way, what you can have one more. Look, if it would have been for butyl only, I am telling you how when to say iso. Okay, let us consider this one only when we are having 4 carbon atoms. Here also you can see 4 carbon atoms are there, and now the rearrangement what I am writing in this also 4 carbon atoms we are having, but the difference is Cl is attached to 1 degree. Okay, and this type of arrangement is there. Whenever we have this kind of arrangement now, on the side we generally use the word, we know it, iso, isn't it? So iso, and since total 4 carbon atoms are there, so this would become isobutyl chloride. It would have been tertiary instead of secondary when the carbon would have been surrounded by 3 carbon atoms. Now I am not writing hydrogen, okay, you can satisfy the valencies, you can write everywhere H3. So since it is time consuming, that's why. So now look, the carbon to what functional group is attached is in turn attached to 3 carbon atoms, tertiary, and total how many carbon atoms are there? 4, no? So this was secondary and now this is tertiary butyl chloride. Okay, we could have used neo also, but for neo I need basically 5 carbon atoms. So for neo this type of arrangement will be there, and now here this, okay, satisfy the valencies here. Now on the side, left hand side, we are having this kind of arrangement, and this is attached to 1 degree. This is neopentyl chloride. So this way we can give a few common names, using primary, secondary, tertiary, or normal, iso, neo, these kind of namings. So these namings basically you will be requiring when you will be converting, you will be undergoing some conversions. During the conversion, mostly they say ki convert isobutyl chloride to so and so, like this. Then you should know how to write the structure. Okay, so this page is done. Now let us come to other one. Let us see what is waiting now. Another one. Yes, now here comes one more type of classification, and this classification is, listen, dihalo. When we are having more than one halo compounds, then these dihalo compounds having both the halogen atoms classified as geminal or gem dihalide. When do we call gem dihalide? When both the halogen atoms are present on the same carbon of the chain, we will say gem. Here you can see one carbon, and this carbon itself is having both the chloro groups, isn't it? So this is a kind of gem dihalide. Same way, vicinal word will be used when the two halogen atoms are present on adjacent. In vicinity they are neighborhood. Look, these two neighboring carbon atoms are possessing the halogen atom, so we will call it vicinal dihalide. Okay, so gem dihalide and vicinal dihalide is another kind of classification what you should know. Then come to another page. Here you can just go through this example, then we'll come up, jump to the preparation part now. Okay, this nature has come, fine. Let us have this nature also, nature of CH bond. Now this is polar. Okay, you all know, since halogen atoms are more electronegative than carbon, and look, partial separation of the charges is there. That's why this is polar. In spite of being polar, it is not soluble in water because it cannot undergo hydrogen bonding. Okay, hydrogen bond formation you can't see, that's why. And then of course the bond length increases from CF to Ci as the halogen atom is growing big, the bond is lengthening up. It is enlengthening, means it is becoming large. Fluorine is very small, so carbon small, fluorine small, it will be very close. Okay, and iodine is the largest, that's why the bond length is increasing in this order. So this is the trend for bond length, mark it. Okay, now apart from this, what you can have, let us come to another page. Why is it coming again and again? Yes, come to another page.
Now here, yes, preparation. This preparation part is very important, and you can use these methods to convert alcohol to halo compounds. And here remember, fluoro and iodo compounds cannot be prepared by the methods in general, okay, except a few. Here iodo you will be seeing somewhere, but fluoro compounds essentially are not prepared so easily. For fluoro and iodo compounds we generally use another reactions, okay. Why? Because preparing fluoro compounds results out to be very explosive, okay, so we cannot handle it. Iodine, these reactions are reversible, so being reversible they return back to from where we started, so you don't get as such the iodo compounds. So all these rest of these methods will be for getting chloro or bromo derivatives, okay. So what is this? HX in presence of anhydrous ZnCl2, you can use anhydrous ZnCl2 is working as what? It is working as a catalyst to weaken the carbon and oxygen bond. It helps in weakening carbon oxygen bond. Once this carbon oxygen bond is weakened, you can easily break by using HCl, okay. Now this is Lucas test also. In next chapter you will be studying Lucas test to identify, to distinguish between primary, secondary, tertiary alcohols. So there you can use this as a test, but presently we are using it as preparatory method. Now in this method what you have to remember is the order of using halogen acid, HI most reactive, this order of reactivity I am telling you, okay. HI, then HBr, and then HCl. So reactivity also comes out to be this way. Why? Because I is a better leaving group. I is a better leaving group. It can break easily since the bond length is large. So remember this, okay. Yes. Now when you come to the, this was about the halogen part, okay. When you come to the carbon part, so what arrangement of carbon is going to be more reactive? For that, the tertiary is more reactive than secondary, and secondary is more reactive than primary. On this basis we can use this reaction as distinguishing test for primary, secondary and tertiary alcohols. Tertiary will react quickly, secondary on standing after 5 minutes, and primary only on heating. So this way you can distinguish between, okay. Now the from CBSE once put up the question from here, this one, in case of in presence of pyridine it happens, no. So alcohol you are converting to Cl, and essentially chloro compounds only can be prepared by this method, and this method is known as Dartson's synthesis, okay. Okay, the question here very important, this was put up in CBSE exam, and it was, keep among all these methods to prepare chloro compounds, this method is the beneficial one or most preferred method. So they asked why this is the most preferred method among all these methods, and this was put up in 2019, remember, okay. So they prepared for this also. Why is it the preferred one? Because here you can see, apart from this is 100% efficient. Why? Good yield you are getting, because SO2 is in gaseous state, this also is in gaseous state, and you get rid of, you don't have to go for some other arrangement to separate off, no. So SO2 and HCl you'll get rid of, and what you are left with is your complete chloro compound. No further step is required here. So this is the most preferred method, okay. Then one more line is there, what is very important. Now here come next, okay. Before this, one more thing I have to, here, the above methods are not applicable for the preparation of aryl halides. Now put a Q here also, because one question can be framed out from here as well. Okay, why can't you use these kind of methods for preparing the aryl halides? Well, the answer is also given, because
the carbon oxygen bond in phenols have a partial double bond character, which is as a result of resonance. So when you speak about phenol, like from phenol, if you need to prepare, no, if you talk about this undergoing resonance, resonating structures you must have drawn in your previous class also. So undergoing resonance, the electron movement is somewhat like this. Okay, so what you are visualizing now, here you are seeing carbon and oxygen single bond, but actually as a result of resonance it is not single, it is partial double bond character. So here partial double bond character due to resonance is coming, and that's why it is very difficult to break oxygen from here, to detach oxygen and bring chloro or fluoro or bromo, some other halo compound, halo atom. Okay, so one question you can prepare from here also. Fine. Now let us come to another page. Then Sandmeyer reaction will come. All this you can have, and okay, this is also there. This method, remember, for conversions. Whenever you have to prepare dihalo compound, vicinal dihalide, so you can use bromine in presence of carbon tetrafluoride. This is working as solvent. And here Markovnikov addition, you can use Markovnikov reaction for unsymmetric alkene. This is symmetric, example is of symmetric, but in case of unsymmetric alkene, what you can use is, you can apply Markovnikov rule. Hydrogen on priority basis goes to that carbon first, which is already rich in hydrogen. Okay, so that way you can do this. Now comes here halogen exchange. Now this method is suitable for getting fluoro and iodo compounds. What I told you, otherwise is not possible. Previously I told you, getting fluoro compounds is rather impossible. Why? Because the fluor preparation, the processes for having fluoro compounds is highly explosive, and you cannot control the reaction. So fluoro compounds can be prepared by halide exchange or halogen exchange method. Fine. Look here, you can see, you can first put up chloro or bromo group. Okay, because putting up these two halogen atoms is very easy. So any of the aforementioned methods you can use, and you can substitute now this Br by F, and this can be done by using heavy metal fluorides. Many examples are given here, you can select any one, and this reaction is known as Schwarz reaction, one name reaction. Prepare this. In case you want iodo compounds, then you can go for Finkelstein reaction. Here it is given Finkelstein reaction. For that you need NaI, but sodium iodide is to be dissolved in acetone. Okay, remember this, the acetone is very necessary. You need to dissolve in this. Fine. Now here one more question can be framed out. Why can't you use, put a Q here first, right? Why NaCl and NaBr can't be used for preparing chloro and bromo compounds by Finkelstein reaction? This cannot be done. Why this and this can't be used? This cannot be used. Why cannot be used? Because these are, I am writing the answer here. Okay, these are insoluble in acetone, and unless and until it is soluble in acetone, how can you react? Or solids don't react, isn't it? The reactions are faster. You must be knowing this. The reactions are quicker in liquid state. So since it is not dissolving in acetone only it is NaI what gets dissolved in acetone, and that's why we take the benefit of this solubility. Okay, and on the basis of this we can use only sodium iodide to get iodo compounds. We cannot prepare chloro and bromo compounds. So here also one question can be framed out. Come to another one now. Here they are giving the preparation of haloarenes. You can just go through. You can go through these name reactions also. Sandmeyer reaction is coming. So this is diazotization. Further you will be using. So diazotization or 0 degree Celsius. It is one and the same thing. 0 to 5 you can use. Okay, for diazotizing. And whenever you want to put any group on benzene ring, this is, I guess, the most preferred method, the best method it is. Okay, so let us come to look. Iodo compounds can also be prepared easily by using Ki.
Yes, now come up to the physical properties. Very important line. Alkyl halides are colorless when pure, but exposed to light, then they can develop color. Okay, so one you can check this. Now come up to the melting point and boiling point. And here also one question was framed out, and you can mark out these lines. The boiling point of alkyl halide decreases in order this is the order for the boiling points. Okay, the maximum boiling point will be for iodo compounds, keeping carbon atoms same, and this is because the this mass increases. So obviously when weight increases or mass increases, then obviously boiling point also increases. So this way you can easily have. Achha, one more thing I would like to tell you here, the order of dipole moment. Why dipole moment? Because I told you polarity is there. Carbon which is holding this hydrogen, which is holding this halogen atom is slightly positive, and this halogen atom is electronegative. That's why it is represented by slight negative charge. Okay, when separation of charges is there, obviously we say ki polarity is there, isn't it? So on the basis of polarity, when plus and minus ends are there, then of course we need to talk about the dipole moment also. So dipole moment, the order for dipole moment will be always fluoro greater than fluoro. Look, fluoro has shifted here in spite of the fact that F is most electronegative atom in the entire periodic table. In fact, no, still this is succeeding over this F. Rest you can easily say about others. Now, why this happens? Can you predict why this shifting was there? Why wasn't it this way? Ki RF greater than RCl, greater than RBr, greater than RI. This happens because of inter-electronic repulsions. What destabilize it? Okay, so one question you can prepare here also. Now children, one tip I would like to give you for investigating or for getting the trend of melting point and boiling point. Whenever you happen to talk about the melting points, keep in consideration the reason or the thing what on basis of what you can tell the order for the melting points, isn't it? That particular point, the factor, that reason should be taken in consideration. The close packing. Yeah, you can talk about symmetry in lattice. It is one and the same thing. The better the packing, the difficult it is to melt. Okay, so melting point should always be reported on the basis of the packing efficiency. If close packing is there, obviously the melting point is going to be large. Whenever you talk about boiling points, no, the reason should always come in form of dipole moment. Dipole moment will appear whenever there is polarity. So the one which is more polar will always have more dipole moment, and ultimately more boiling point. So these are the points what you should take in consideration while answering the trends everywhere applicable. No, so this is a tip what you can apply everywhere. For talking about the melting point, take in consideration the close packing or the symmetry, and for talking about the boiling point pattern, you can take in consideration the dipole moment. Fine. Now switch over, and here also you can come, you can just go through. I don't find anything important here, but still just go through. Yeah, solubility, here we can come. Now see here, first two lines, the haloalkanes are very slightly soluble in water. Now put a Q here. Once again, a question for board examination 2019 it was, and it was not directly asked like this directly, but the question there in boards, it was to give reason, and for what you have to give reason. Among these, the first part was chloroethane. Haloalkane it is, they specified it. So chloroethane is insoluble in water. They asked it this way.
Whenever we talk about the solubility in water, now all those things what will form hydrogen bond will be soluble in water. Now when chloroethane doesn't form hydrogen bond, means it is insoluble in water. So when you have to say it is insoluble in water, the proper answer comes no H bonding. Simple. That's it. Okay. So and not only in 2019, it was also, it appeared in 2015 as well, and there they didn't specify chloroethane, they said chloroalkanes, they specified, are insoluble in water. It was framed out like this. So whatever way it is framed out, you need not worry, whenever they are talking about the solubility, like it is insoluble in water, of course the hydrogen bonding is not there, that's why it is. Okay, so are insoluble in water. So either of the way you can see, and I guess it is very important also because it is appearing very often, quite often it is coming, that's why. Chaliye, next, let us come to the next. Let me scroll my page also. Now here, yes, go through this table, very important, and from this table you can find out the difference here, isn't it? Now when you add KCN to chloro compounds, then Cl is replaced by Cn. In case you use AgCN salt, then you get the nucleophile that is being that is attacking is Cn only, but the product will be in one case cyanide and in another case it will be isocyanide. Whenever you use silver salt, the attachment is promoted from nitrogen always. Now why does this happen? Just put a Q. Why is this, why this difference is there? Similarly you can see here also, see, when KNO2 you are using, you are preparing nitrite, and when you are using silver nitrite AgNO2, you are getting the nitroalkane. See, nitrogen, the attack from nitrogen is being promoted every time whenever you use the silver salt. Now the question that is very important is given here, this one, very important, mark it very important and go through it. If in case you can't frame out in your own language, then please cram out the entire thing as such. Okay, if you can do put up in your words, it is very good, but if you are not unable, then better to cram out only, rather than losing marks. Yes, now come up here, mark from here. As the reaction progresses and the bond between incoming nucleophile and the carbon atom starts forming, the bond between carbon atom and leaving group weakens off, and weak हो जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, isn't it? तो ये सारा आप यहाँ से अंडरलाइन कर लें, एंड ये आपको इन्वर्शन के बारे में बताएगा अभी. ठीक है, till here the entire thing go through, very important. Why? Because you need to have the differences between SN1 and SN2. Quickly एक बार यहाँ लिख लेते हैं SN1 और SN2 के बीच के differences. SN1 क्या होता है? It always takes nucleophilic substitution unimolecular reactions. No, these kind of reactions, they always occur in 2 steps. Okay, you get the carbocation formation. Okay, in between, in first step you get carbocation formed. Okay, and remember, benzylic carbocation is the most stable one. Okay, so look forward for that. Now slowest step among the 2 steps, the slowest step is rate determining step. What else? Whenever you get weak nucleophile, you can go with, this is nucleophile representation. Okay, whenever you have weak nucleophile, you can go for SN1. Then if in case you are undergoing SN1 reaction, then partial racemization will take place. Okay, then one more difference can be when the nucleophile is weak and there is low concentration of nucleophile, then also it takes time and it is followed in steps. Simultaneously here, one step, no carbocation,
There are no steps, so no question arises about the slowest step. No, only elementary step is there, the single whole soul step. Okay, and low concentration, then go for SN1. When high concentration of nucleophile, then go for SN2. Here partial racemization is taking place, and here inversion. That's why I made you mark here. No, inversion of configuration takes place. Okay, strong nucleophile, immediate attack will be there, and it will go for SN2. In a single step only it will appear. Okay, these are the basic ones. Many are there. Abhi I would like to write to 10 will come, but these are the basic ones what you should know. You should be well versed with. No, that's why. And of course the trend you should not forget. Whenever you are going with SN1, the trend should be tertiary more capable of SN1, then secondary, then primary. Primary, of course, no question arises, and here primary greater than secondary, and this is the order of reactivity. Okay, undergoing this kind of reaction. Now let us come to the other page. Okay, ठीक है, ये सब आप देख लें. इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन वगैरह समझाया हुआ है. इस पे आए आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये जो आपको ऑर्डर दिख रहा है, जिसको मैंने अभी आपको डिफरेंस लिखते वक्त भी बताया था. Now this order once again is very important. Why it is important? Because in 2009 इसी ऑर्डर पे बेस एक क्वेश्चन CBSE में अपियर हुआ था. और 2009 ही क्यों, मेनी अ टाइम्स इट हैपन्स, एंड हो सकता है SN1 SN2 के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाए. तो आपको ये ऑर्डर का ध्यान पूरा रखना पड़ेगा. जैसे 2009 का स्पेशली जो क्वेश्चन है वो मैं बता देती हूँ. विच वंस ऑफ द फॉलोइंग pairs undergo SN2 reaction faster and why? You need to give the reason as well. Okay, तो आपको SN2 के बेसिस पे बताना है कि कौन सा वाला सबसे ज़्यादा तेज़ी से करेगा. जैसे ऑप्शंस ले लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट वाला ले रहे हैं हम. एक तो ये लिया है साइक्लोहेक्साइल, है ना, उसके ऊपर CH2Cl लगा हुआ है. और दूसरा है, अब ये एरोमेटिक का फर्क आ रहा है, आपको दिख रहा है, एरोमेटिक का फर्क आ रहा है. इससे आपको रिजल्ट मिलेगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का. ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस विल अंडरगो SN1 फास्टर. जहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आता है ना, वहाँ SN1 फास्टर हो जाएगा. ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस वन. एंड अभी इसको ही कंपेयर एक और से भी करा लेते हैं. इसको कंपेयर करा लो एराइलिक से डायरेक्टली, आप इसको कंपेयर करा लो. देन ऑल्सो दिस. ओके, देन कम सी. एक और ले लेते हैं हम, एक जैसा ले लेते हैं. यहाँ आई लगा हुआ है और यहाँ लगा है Cl. अभी तो SN1 हो SN2 हो वॉट एवर वे, बट दिस वन विल बी द मोस्ट प्रिफर्ड वन, SN2. क्यों? क्योंकि आई इज़ अ बेटर लीविंग ग्रुप. रीज़न लिखें, आई बेटर लीविंग ग्रुप. ओके, तो यहाँ पे आप आराम से इसको देख सकते हैं. अब इसके बाद में ये लाइंस जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है. एलाइलिक एंड बेंजाइलिक होल्ड द मोर स्टेबिलिटी या मोर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन. ये ध्यान रखना. ये बल्कि टर्शरी से भी ऊपर आएंगे. क्यों? क्योंकि इनके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है. तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को समझाने के लिए आप यहाँ पे मदद ले सकते हैं. ये सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आपको कोट करने पड़ेंगे. रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, तो ये दिखाना पड़ेगा आपको. इसकी आदत डाल लीजिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने की, ये बहुत ज़रूरी है. एंड ऑर्डर ये रहा, आई बेटर लीविंग ग्रुप है ना, इसीलिए जब भी कभी क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐसे कोई कंपाउंड्स दिए हों, जैसे कि मैंने C पार्ट लिखा हुआ था, तो वहाँ पे आप इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, इसका तो यहाँ पे भी है. हाँ, ये था 2009 का ये है ना. ऐसे कैसे क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आप इसको गो थ्रू इट. एक्सरसाइज में भी होंगे, इंटेक्स भी हैं, एक्सरसाइज भी हैं, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आप इनको कर सकते हैं. अब बेटा इसके बाद में जो आता है वो है आपका पूरा, इसके बारे में समझाएंगे आपको. एसिमेट्रिक कार्बन एंड एवरीथिंग ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूरा समझा रखा है. तो इन पेजेस को तो आप ले लें, अच्छे से पढ़ते जाएं, गो थ्रू इट, एक रीडिंग मार लें बढ़िया सा, और जो जो समझ में आता है उसको
साइड में जॉट डाउन कर लें, कायरल क्या होता है, कायरल सेंटर क्या होता है, इस तरह से आप यहाँ से रेसिमाइजेशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, ये सब आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो यू कैन रेफर टू द नोट्स। तो मेरे नोट्स में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से दी हुई है, तो आप उनको देख सकते हैं। जो मेंशन करने लायक और ध्यान देने लायक बात है वो है ये वाला इनैंशियोमर्स का, ठीक है। तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, कैसे डिफर करते हैं, क्या डेक्स्ट्रो होता है, क्या लीवो होता है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड सेम वे देन इसके बाद में आपको और थोड़ा सा समझाया हुआ है नीचे, तो आप इसको और देख सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इतना काम आप कर लें। यहाँ पे फिर एक हम लेते हैं 2016 का क्वेश्चन है बोर्ड का, वो है गिव रीजन की फॉर्म में था। एंड गिव रीजन में जो पार्ट आ रखा है वो है SN1 reactions are accompanied by racemization in optically active alkyl halides। ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड है माने कायरल सेंटर तो होगा ही होगा, है ना। तो कायरल सेंटर है तो ऐसे में जब SN1 से जाएंगे तो पार्शियल रेसिमाइजेशन आता है। तो उन्होंने रेसिमाइजेशन के बारे में पूछा था। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ये रहा। रेसिमिक मिक्सचर के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि आपको दोनों ही मिल रहे हैं ना। तो अब पार्ट है जो आपको सेम ऑप्टिकल एक्टिविटी का मिल रहा है और एक है जो उसका डिफरेंट वाला है ना, रोटेशन जहाँ कैंसिल हो गया है। तो अगर 50-50 है तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो उसके बारे में आपको जो भी आंसर लेना है वो यहाँ से लेना है। और ऐसा क्यों हो पाता है SN1 में, क्योंकि कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन जो बन जाता है वो आराम से कहीं से भी अटैक करवा सकता है। तो उसके बारे में एक अच्छा सा अपना नोट, अपना राइटअप तैयार कर लें। नहीं अगर समझ में आता है तो प्लीज़ रेफ़र टू द नोट्स, वहाँ इसके लिए पूरा ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आज मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस बता रही हूँ कि कहाँ से लाइन में से कैसे फ्रेम आउट होते हैं। आपको इनकी डिटेल चाहिए तो आप उनके लिए नोट्स को रेफ़र करें, है ना, और उस तरह से आप फिर कर लें इनको। बट अभी बेसिकली तो मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ। देखो यहाँ भी SN1 SN2 के बारे में ही एग्जाम्पल्स लेकर के समझाया हुआ है। सो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं और कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप पढ़ लेना, बट जो लाइंस इंपॉर्टेंट है जहाँ पर कोई क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है वो मैंने आपको बता दिया है, इज़न्ट इट। अब आप आ जाइए इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन, बेटर टू कॉल बीटा एलिमिनेशन इसको, क्योंकि हमारे यहाँ पे अल्फा नहीं है, गामा नहीं है, बीटा एलिमिनेशन है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इसके लिए आप यहाँ से पढ़ लें किस तरह से होता है। एंड गवर्नड बाय, ये ध्यान रखना, दिस बीटा एलिमिनेशन इज गवर्नड बाय सीजर फ्लो। इस रूल के बारे में आपको पता होगा। 80-20 मिक्सचर होता है, 80% एंड 20% का, और आइसोमेरिक फॉर्म आती है तो आपका बन जाता है 70-10-20% मिक्सचर। तो कहाँ से एलिमिनेशन ज़्यादा प्रमोट होना है ना, वो आपको बताया हुआ है। और इसको बल्कि यहाँ पे शायद नीचे इसमें समझाया भी होगा दोबारा, क्योंकि 11th के लिए डिपेंड नहीं करते हैं। यस, या फ्रॉम हियर यू कैन पिक अप द सिजर फ्लो, ओके। और वो समझा भी रखा है, तो गो थ्रू इट। उसके बाद में आ जाए रिएक्शन विद मेटल्स पे, इस पे आ जाए। और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और एक ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस पे एक क्यू डाल दें, क्योंकि इसके बारे में डिफाइन करने के लिए आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कहाँ क्या होते हैं, जहाँ पर एक मेटल, ये रहा मेटल, और ऑर्गेनिक कंपाउंड माने कार्बन, कार्बन एंड मेटल का डायरेक्टली बॉन्ड जहाँ बनता है उनको सबको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। डायरेक्टली नहीं पूछा है अभी तक, CBSE में अपेयर नहीं हुआ है, लेकिन एक बार ये सैम्पल पेपर में आया है, तो बी प्रिपेयर फॉर इवन दिस, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। जो क्वेश्चन अपेयर हो चुका है वो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिजर्वेशन पे है, कि इसको बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे प्रिजर्व करें एनहाइड्रस कंडीशंस में, बहुत ज़रूरी है, इट इज़ एसेंशियल, इज़न्ट इट। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दीज आर हाईली रिएक्टिव, ये पूरा ले लें। और जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पुट अ क्यू फॉर दिस एंड यू गेट द आंसर हियर इटसेल्फ, इसी में समझाया हुआ है, ओके।
नीड नॉट टेल वुड्स रिएक्शन आप कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ कहीं भी आपको डुप्लीकेशन करवाना है, कार्बन का डबल नंबर करवाना है, वहाँ डुप्लीकेशन करते वक्त आप वुड्स रिएक्शन यूज़ कर दीजिए। ऑफ कोर्स इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट, ये तो लिखना पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स, हेलोएरीन्स के बारे में आ रहा है, ये भी बहुत रिएक्टिव हैं। बहुत रिएक्टिव है क्या? नहीं है, लेस रिएक्टिव हैं ये। और क्यों लेस रिएक्टिव है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब कहने का मतलब ये है कि अल्काइल हेलाइड्स में जब आपने हेलोजन ग्रुप किसी कार्बन पे लगाया हुआ था तो उस Cl को हटाना बड़ा आसान काम था, क्योंकि वहाँ पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड था। बट यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस की वजह से आप देख सकते हैं, ये देखिए बॉन्ड अंदर की तरफ ये लोन पेयर गए हुए हैं, तो इस तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है ये इसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है, बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाता है। यहाँ कई सारे पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, है ना। इसको एक बारी एक दिया गया था 2016 में, इसी में से ही पूछा था, यही रेजोनेंस को डायरेक्टली ना पूछ करके इसको जो फ्रेम आउट किया गया था वो ये था कि कार्बन क्लोरो एंड क्लोरीन एटम एंड कार्बन the CCl bond length in chlorobenzene is shorter than CCl bond length in CH3Cl। देखिए वही है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस में जा रहा है, तो आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा। ऑब्वियसली डबल सिंगल से छोटा होता है, ये आपको मालूम है, तो इसी वजह से आप ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। और कई दफ़ा ये पूछा जाता है, एक और भी है कि वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर नॉट ईजी इन हेलोएरीन्स। एक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ला करके वीक न्यूक्लियोफाइल को हटाना, डिस्प्लेस करना, ये काम हेलोएरीन्स में आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो आसानी से? आपको ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्टेशन से छोटी हो गई है ना। तो एक तो आपको रेजोनेंस दिखा दिया, एक आपको ये है डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन। जब आप एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो हेलोजन डायरेक्टली sp3 पे अटैच है, और जब आप हेलोएरीन्स की बात करते हैं तो हेलोजन जो है वो sp2 पे अटैच्ड है। तो ये एक डिफरेंस आ गया। तीसरा पॉइंट है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अगर हम ये उम्मीद भी कर लें कि किसी तरह से हटा दिया आपने न्यूक्लियोफाइल, तो जो लेफ्ट ओवर है फिनाइल वो कैटायन की फॉर्म में रहेगा, तो ये कैटायन स्टेबलाइज नहीं है, रेजोनेंस में नहीं जा सकता, इसलिए रूल्ड आउट है। देन चौथा जो है वो ये है कि जब आप न्यूक्लियोफाइल ला रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होता है। बेंजीन खुद ही एक इलेक्ट्रॉन का हब है, तो एक रिच के पास दूसरा रिच कभी आ नहीं सकता, दोनों के पास सेम चार्जेस हैं, भयंकर रिपल्शंस होंगे। सो बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शंस ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल के नॉट ईजिली अप्रोच। या तो आप इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल करके, तभी जा करके ये काम हो पाएगा। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स के लिए तैयार रहिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये आता है यहाँ पर, वो ये है कि द प्रेजेंस ऑफ, इन्होंने तो लाइन लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स। पुट अ क्यू हियर, ऐसा का ऐसा उठा के बोर्ड में वाई की तरह से पूछा गया है। आपको स्ट्रक्चर्स देने पड़ेंगे, आपको अपना डेफिनेशन देना पड़ेगा, अपना खुद का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड इस सब के साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वाई एसेंशियली ऑर्थोपैरा ही मेटा पे होता है तो नहीं काम होता, तो उसका आंसर ये है, आंसर टू दैट। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2015 में आया है, 2019 में पूछा गया है, बिल्कुल ये का ये। तो आपको इसको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के बताना पड़ेगा कि मेटा पे होता है तो वो इफेक्टिव नहीं होता है। इसके लिए आपको बना बनाया 2015-19 का क्वेश्चन नीचे में बॉक्स में मिल भी रहा है, ये डाल लीजिए, मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये क्योंकि 15 और 19 दो बार आया हुआ है, ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो इसको गो थ्रू इट। उसके बाद में आ जाइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस में ये वाला लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एटम जो है वो स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग है और साथ में ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट तो इसका माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग होने के बावजूद ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग कैसे है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ये रहा यहाँ पे पुट अ क्यू।
इसका एक y आता है, तो इस पर एक एक्सप्लेनेशन बढ़िया सा तैयार कर लें आप पढ़ करके, है ना, पूरा ही ले लें, बल्कि इसको यहाँ तक नहीं, इसको एक्सटेंड कर लो, पूरा ले लें, ठीक है। तो आप ये ले लें, यहाँ से तैयारी कर लें, इसको पढ़ लें। उसके बाद में एक और बोर्ड का क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस को बढ़िया से समझ लीजिए। ये बेस्ट तरीके हैं, जब बेंजीन पे डायरेक्टली आपको CH3 लगाना हो, बेंजीन पे डायरेक्टली आपको COCH3 लगाना हो, तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कह रही हूँ इन बोर्ड्स। वेरी वेरी वेरी, जितने भी वेरी लगा सकते हैं ना आप उतने लगाते जाइए, एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको बढ़िया से तैयार कर लें, यहाँ से उठा करके क्वेश्चन पूछा गया है। और एक इंटेक्स क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, ये वाला बिल्कुल ऐसा का ऐसा बोर्ड में आया हुआ है बिना किसी चेंजेस के, है ना। तो ये गो थ्रू इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें थोड़ा सा। एंड एक बार ये आया था कि हाउ कैन यू प्रिपेयर डाइफिनाइल, ये कन्वर्जन के नाम पे था, 1 मार्क का क्वेश्चन था, फ्रॉम बेंजीन, मतलब बेंजीन को डुप्लीकेट कैसे करेंगे आप, है ना। तो दिस इज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा 2020 के लिए मैं आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ। 2020 में आपके आगे जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, कंपाउंड्स वाला पोर्शन नहीं आएगा, इसीलिए वी वॉन्ट गो फॉर दिस, ये एलिमिनेट हो चुका है इसमें से। आपका सिलेबस यहीं तक का है, तो प्लीज़ गो थ्रू दिस एंड दिस वन ऑल्सो, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर लें, और मैंने जितना मार्क कराया है उतना काम कर लें, इसको बढ़िया से पढ़ लें, ओके। मेरे नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर लेसन नंबर 11 जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लाइन कैसे कैसे बोर्ड के क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ वेट करते रहें उसका, और ये थोड़ा पढ़ते रहें अपना, गो थ्रू इट। ये जो लाइंस मैंने मार्क कराई हैं इनको प्लीज़ बढ़िया से तैयार कर लें, कोई डराने वाला नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू एंड अप विद 2 बातें बताना चाहूँगी जो यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है। फर्स्ट है, हम हर बारी बात करते हैं कि हम कोई ग्रुप कैसे लगाएं, हर चैप्टर में हम ये कोशिशें करते हैं कि कोई ग्रुप कैसे लगाया जा सकता है ना। जब हेलो की बात कर रहे हैं तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, किसी भी कार्बन के ऊपर कैसे लगाए जा सकते हैं, वो सारी तैयारियां आपने यहाँ पे की हैं। लेकिन हाउ टू रिमूव इट, कैसे हटाया जाए। कभी कोई कन्वर्जन में इफ़ यू कम अक्रॉस सच सिचुएशन जहाँ पर आपके पास में बेंजीन के ऊपर में हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, अब इसको आप हटाएंगे कैसे। तो इसको हटाने के लिए अगर एल्काइल है तब तो आप क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना करके उसको वाटर की प्रेजेंस में कर दें, आपको RH मिल जाएगा। वाटर की प्रेजेंस में रखेंगे तो एल्केन आपको मिल जाता है ना। लेकिन अगर आप यहाँ से बेंजीन पे से हटाना चाहते हैं तो बेस्ट वे इज़ यूज़ निकल एल्यूमिनियम अलॉय, ये यूज़ करें तो आपका यहाँ से रिडक्शन हो जाएगा, दिस अंडरगोज रिडक्शन, एंड रिडक्शन माने Cl हट जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहली बात हो गई जो आपको बहुत ध्यान रखने की है। और इसके अलावा में जो आप बात यहाँ रख सकते हैं वो ये है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश, ये 2 बातें आप हर चैप्टर में देखते रहो कि कैसे कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, मान लीजिए एक आपको फ्लोरो कंपाउंड दिया है, एक क्लोरो दिया है, एक ब्रोमो दिया है और एक आयोडो दिया है, आप इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। ये तो वैसे ही नहीं दिया जाएगा, ये रिएक्टिव नहीं है, एक्सप्लोसिव होता है, तो इसको साइड में हटा दीजिए। हाँ, जो स्टेबल होते हैं वो हैं क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। इन 3 के बीच में डिस्टिंग्विश करना हो तो आप क्या करेंगे, HNO3 डालें, बॉईल करें और AgNO3 डाल दें। AgNO3 डाल करके अगर आपको वाइट PPT नज़र आता है, कर्डी वाइट PPT, तो यू आर हैविंग Cl, इन केस ऑफ Cl यू गेट वाइट PPT। आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी है, तो आपने लैब में भी किया होगा, तो ये सेम वही है, बस आपने HNO3 के साथ बॉईल किया है, आपने आयनिक में कन्वर्ट किया है इसको, ठीक है। इन केस ऑफ ब्रोमो यू गेट लाइट येलो, कहते हैं किताबी बात है, लाइट येलो प्रैक्टिकली नहीं मिलता है आपको, पेल मिलता है या ऑफ वाइट मिलता है, वाइट का थोड़ा सा येलोइश सा शेड, है ना। तो ऑफ वाइट वाला अगर PPT मिलता है तो दिस इज ब्रोमो, एंड अगर आयोडो होगा तो यूल गेट डीप येलो PPT। इस तरह से आप डिस्टिंग्विश तीनों के बीच में कर सकते हो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। तो इनके लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये सब कंप्लीट हो गया है। अब उम्मीद करती हूँ कि आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन गो थ्रू द नोट्स, फाइन।